Hello everyone, welcome back to this platform. If you are preparing for any exams related to botany, this series is your ultimate companion. In this series, I am solving the entire HPU Botany Entrance Exam 2024 in 10 parts, with each video tackling 10 questions in depth. In today's video, we will explore the first 10 questions, providing detailed explanation to boost your understanding and confidence. So grab your notes and let's dive in. The first question asked was, porphyra is a resource of which of the following vitamins? Our options are vitamin A and B, vitamin A and C, vitamin B and C, vitamin C and D. So the correct answer of this question is vitamin B and C. And this genus belongs to the group of red algae. और ये पाया जाता है mostly in sea water and it prefers to grow in cold sea water. इससे जो फूड आइटम्स बनती हैं दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक नोरी और अमानोरी इन केस ऑफ जापान, लिवर इन केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम and Canada, then zika in China and so on in other countries. There are many algal genus which are used as a food item and they're rich source of minerals. Some research paper shows that this genus porphyra contains vitamin B and specifically vitamin B12 and vitamin C, and the amount of vitamin B12 which is present in this algal form is near about 32 to 133 micrograms and per 100 grams of dry weight of porphyra. तो इतने अमाउंट में जो vitamin B12 है वो पाया जाता है इसमें. And in addition to this, it also contains vitamin C, and there are many other proteins which are present in this algal form. Then it contains minerals, dietary fibers, polyunsaturated fatty acids, etc. As I've already discussed, जो इससे food items बनती हैं उसको different names से जाना जाता है, like nori in Japan, amanori in Japan, then liver in United States and Canada, then purple liver in Britain, Ireland, Karingo in New Zealand, Kim in Korea, and Zika in China. And it is also the primary food component of specific Japanese delicacy named as sushi. जो food item sushi है उसका भी important component है, and this is rich in vitamin B12 and vitamin C. If we talk about its vegetative structures, plant body is plate-like, parenchymatous, and it resembles with the green alga. और जो thallus है इसका that is unbranched and it is attached to the substratum with the help of a disc-like structure जिसे कहा जाता है hold fast. There are many other algal forms which are also used for the preparation of various food items. Like we have this laminaria, एक brown algae है, इससे जो food item बनती है that is named by this name, that is kombu or konbu. Then in many part of the world, like specifically in China, non-stock balls are collected and boiled and then finally consumed. Alaria ये एक brown algae है, इससे जो food item बनती है उसे कहा जाता है saruman. Then with this there is one green algae named as monostroma, इससे जो food item बनता है is named as aonori. Alva lactivca, it's a green algae और इसको mostly use किया जाता है for the preparation of salad and soups. इसे commonly sea lettuce भी कहा जाता है. Then we have this Rhodymania palmate, ये एक red algae है, इससे जो food item बनती है that is named as dulse. Then comes citron. This question was asked in previous examinations. Citron जो food item it is prepared from this algal genus named as Symbiosis in United States. Dulse I've already discussed, it's a red algae और इसको mostly snack food की तरह use किया जाता है. Then we have this Caulerpa racemosa. This is again edible green algae and commonly known as sea grapes. It is also rich in fibers, proteins, minerals, specifically calcium, magnesium, folic acid, ascorbic acid, vitamin A and vitamin B1. Then we have this Durvelia antarctica. In Chilean cuisine, जो इसका stem और hold fast है वो use किया जाता है and it is known as hult in different recipes like salad stews. एक tribe है that is Mapuche indigenous people, ये इसे कोलोफे कहते हैं. Then green liver, ये South India में बनता है from alga Spirogyra. So these are some food items which are prepared from different genuses of the algae. This is the nutritional content which is found in case of porphyra. It contains 47% of proteins, low potassium and sodium ratio, then low lipid content, polysaccharide 30 to 60%, dietary fibers and minerals like vitamin B1, B2, B12. The next question asked was,
Flagella are generally absent in which group of the algae? Our options are Rhodophyta and Charophyta. Rhodophyta and Cyanophyta, Charophyta and Chrysophyta, Chrysophyta and Rhodophyta. So its correct answer is Rhodophyta and Cyanophyta. Flagella are absent in red algae and blue green algae. इन दोनों ही ग्रुप्स में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं. जो रेड एल्गी है उसकी किसी भी लाइफ साइकिल किसी भी स्टेज में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं. सेम इज द केस विद साइनोबैक्टीरिया. जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इसमें भी फ्लैजेला नहीं होते हैं, बट सम स्पीशीज कैन मूव बाय सम अदर वेज लाइक ग्लाइडिंग और ट्विचिंग along the surfaces. Most of the cyanobacterias are phytoplanktons, और जो phytoplanktons होते हैं they move on this they lives on the surface of water bodies and they move on the mercy of water current. While if we talk about this group that is Chrysophyta, ये जो algal group है इसके कुछ important features है, like it contains 2 unequal flagella. इसमें 2 unequal flagella present होते हैं. Then it is golden yellow in color due to presence of certain accessory pigments. और इसकी जो cell wall है that is made up of cellulose and silica. Cellulose और silica present होता है, and they are mostly free swimming, unicellular, and if they are present in water bodies with low calcium level. So these are some important features of this group of algae. The next question asked was pigments has chlorophyll A and B, alpha and beta carotenes, xanthophylls are found in which group of algae? Our options are Chlorophyceae, Rhodophyceae, Phaeophyceae, and Basidiophyceae. And the correct answer of this question is Chlorophyceae. Chlorophyceae commonly कहा जाता है green algae, while Rhodophyceae में आती है red algae, and in case of Phaeophyceae it contains brown algae, and Basidiophyceae contains the special group of organisms जिन्हें कहा जाता है diatoms. They are mostly unicellular organisms and their cell wall is made up of silica, and their cell wall is rigid glass like, जिसे एक और नाम से जानते हैं, that is commonly known as frustule. उसे frustule भी कहा जाता है, and its cell structure is made up of 2 halves. The upper half is known as epitheca and the lower half is known as hypotheca, and the cell structures are similar to that of a soap box. If we talk about the classification of algae, जो basic criteria यूज होते हैं classification के लिए, इसमें आता है pigment, that is one of the important criteria for classification, pigment distribution in algae. Then comes the nature of reserve food material, cell wall composition, and then comes pattern of flagellation, mode of reproduction, and final life cycle. So in this slide I will discuss about the pigment distribution among different groups of algae. Mainly there are 3 pigment systems. Pigments are any substances which absorb light. 3 pigments which are present in algae. One is the major pigment, that is chlorophyll, then comes carotenoids, and finally comes phycobilates. Among these 3 pigments, these 2, that is chlorophyll and carotenoids, these are fat soluble pigments, और जो phycobilates हैं they are water soluble pigments. And among this we have different types of chlorophylls, that are chlorophyll A, B, C, D, E, and bacterial chlorophyll, etc. While carotenoids are of 2 types, that is carotene and xanthophylls. So this table shows the distribution of pigments among different groups of algae. Firstly, we have this division Chlorophyta. It contains chlorophyll, chlorophyll A and B, carotenes, almost all the carotenes like alpha, beta, gamma, and lycopene. And this is the carotene which is responsible for red color of tomatoes. Then it contains xanthophylls like we have lutein, violoxanthin, neoxanthin, astaxanthin, zeaxanthin, and it lacks biliverdins, which is the 3rd type of pigment. Among this, chlorophyll A is the universal pigment, which is mainly meant for photosynthesis, and along with this, chlorophyll B is also present, so it imparts a green color to the algal genus. The next division is Xanthophyta, which is commonly known as yellow-green algae. It contains chlorophyll A and chlorophyll C. Chlorophyll C. This chlorophyll E is present in the zoospore of Ochiria. जो chlorophyll E होता है ये present होता है zoospore of Ochiria में. Otherwise, this group contains chlorophyll A and chlorophyll C. Next comes Basidiophyta. It includes the diatoms. इसमें भी chlorophyll A और C होते हैं. If we talk about the carotene, the most common carotene found in all the groups, almost all the groups, is beta carotene, and which is a precursor of vitamin A. Then it contains epsilon carotene. Then we have this fucoxanthin,
diatoxanthin and diadenosanthin, which are xanthophylls which are present in Basidiophyta. Then comes Phaeophyta. Phaeophyta में आता है, this division contains brown algae. इसमें भी present होता है chlorophyll A and C. Carotene is beta carotene. In addition to this, it contains xanthophylls like lutein, violozanthin, fucoxanthin, diatoxanthin. While the next group is Rhodophyta. It includes chlorophyll A and chlorophyll D. Among carotenes, it contains beta carotene and alpha carotene. And xanthophylls includes lutein, violozanthin, fucoxanthin, zeaxanthin, and terazanthin. In addition to this, it contains this third type of pigment, which is known as biliverdin, which is a water-soluble pigment. It contains R-phycocyanin and R-phycoerythrin. Among these two pigments, जो R-phycoerythrin है, it is present in greater amount, so that's why it imparts reddish color to this group of algae. But then finally comes Cyanophyta. It includes the most primitive algal forms, जिन्हें commonly कहा जाता है BGA, blue-green algae. It contains chlorophyll A, and carotene which are present in this group is beta carotene. Xanthophylls is lutein. In addition to this, it contains this biliverdin, which includes C-phycocyanin and C-phycoerythrin, and L-phycocyanin. Among these two pigments, this pigment, that is a copper-containing pigment, ये इसमें ज़्यादा present होता है, and it imparts bluish color to this group of algae, that is BGA. So this is the classification, or we can say distribution. Next question asked was, which of the following species of Penicillium are used to impart distinctive flavor to cheese? Our options are Penicillium vermiculatum, Penicillium italicum, Penicillium roqueforti, and Penicillium camemberti, Penicillium digitatum and Penicillium expensive, and Penicillium chrysogenum or Penicillium notata. And the correct answer of this question is Penicillium roqueforti and Penicillium camemberti. और जो भी ये trade names हैं इन cheese के, they are based on the name of species. Like we have Roquefort cheese, जिसमें present होता है Penicillium roqueforti, और ये एक special flavor add करता है इस चीज़ में. So this cheese is known as Roquefort cheese, and we can see here जो ये greenish से patches हैं, they are due to the presence of this fungal genus, that is Penicillium roqueforti. The next we have this camembert cheese, जिसमें present होता है Penicillium camemberti. So these are the famous cheese brands which are found by these fungal. This fungus genus, that is Penicillium, और इसकी दो species use होती है, that is Penicillium roqueforti and Penicillium camemberti. The next question asked was, in Agaricus, the fruiting body is made up of. This question is asked from the type of mycelium. That is haploid mycelium, primary mycelium, secondary mycelium, or tertiary mycelium. So the correct answer of this question is the fruiting body is formed by the tertiary mycelium. Firstly comes haploid mycelium. तो जो ये haploid mycelium है, ये बनता है by the germination of spores, जिन्हें कहा जाता है basidiospores. और इन basidiospores से जो mycelium hyphae arise होता है, that forms the primary mycelium. Then after that, with the course of time, जो दो opposite strain के hyphae हैं, one is of minus strain, other is of plus strain, they fuses to form this dikaryotic hypha, जिसे कहा जाता है secondary mycelium. जो ये dikaryotic mycelium है, it means these mycelia or these hypha contains two nuclei within the same cell, and this process is known as dikaryotization, and hyphae को जाना जाता है dikaryon के नाम से, and these are known as secondary mycelium. After the fusion or intermingling of the secondary mycelium, they forms the tertiary mycelium, and this tertiary mycelium helps in formation of the fruiting body. So primary mycelium जो होता है, that is short-lived and forms the secondary mycelium, और जो कि dikaryotic mycelia होता है, by the fusion of true primary mycelia of opposite strain that I have already discussed. जो hyphae हैं, secondary mycelium, they twist together while forming a white hyphal cord, जिन्हें बोलते हैं rhizomorphs. These are basically root-like structures, and finally they will form the fruiting bodies, जिसे बोलते हैं हम basidiocarp. Like जो agaricus है, उसमें जो हम part consume करते हैं, उस fruiting body को कहा जाता है basidiocarp. As जो rhizomorph होते हैं, they grows in circular colonies, और जो mushrooms हैं, they arises in circular rings, और उन rings को कहा जाता है fairy rings. And these successive rings of fruiting bodies produces year after year and are wider in diameter due to centrifugal growth of mycelia. और जो mycelia जो कि compactly arranged होते हैं in the fruiting bodies, they are mainly the tertiary mycelia. ये होते हैं tertiary mycelia. The next question asked was,
Which of the following is a fruticose lichen? Our options are Colema, then Strigula, then we have Peltigera and Electonia. Firstly, if we talk about the classification of lichens on the basis of thallus structure, अगर हम lichen के thallus की बात करें तो जो lichens होते हैं इनका जो thallus है that is grey or greyish green in color, or some are red or yellow, orange or brown in color. Lichen को हम differentiate करते हैं 3 types of thallus में. First one is the crustose lichen, then second one is the foliose lichen, and the third one is the fruticose lichen. In addition to this, there are many other forms of thallus in lichens also. जो crustose lichen है, as the name indicate, जो ये lichens होते हैं इनका जो thallus structure that appears thin crust like. ये दिखता है हमें thin और crust like on the substratum, like we have bark, stones, rocks. इनके ऊपर ये grow करता है as a thin film or crust. It is either wholly or partially embedded on the substratum. And if we talk about the examples, इसमें आते हैं बहुत सारे examples, like we have Graphis, then comes Lichenora, then comes Verrucaria, then we have this given example that is Strigula and Lycidia. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आते हैं हमारे crustose lichens में. द नेक्स्ट जो कैटेगरी है lichens के thallus की, that is foliose lichen. और जो ये foliose lichen होता है, एज द नेम इंडिकेट, foliose मीन्स जो हमें दिखता है फ्लैट लीफ लाइक, ये हमें दिखता है फ्लैट लीफ लाइक. और इसके जो thallus होता है दे आर हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग विद लोब्स, इसमें लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं. एंड सम पार्ट ऑफ दिस thallus इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. और इसमें कुछ हाइफे जो होते हैं दे ग्रो डाउनवर्ड्स एंड फॉर्म्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है राइजाइंस. तो हम लाइकन्स के केस में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें कहते हैं राइजाइंस, और ये हेल्प करते हैं इन पेनिट्रेशन टू द सबस्ट्रेटम. देन वी हैव सम एग्जांपल्स. इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं इन केस ऑफ फॉलियोस लाइकन, फर्स्ट वन इज द पारमेलिया, जिसे रॉक फ्लावर भी कहा जाता है. देन वी हैव Physia, we have the dog lichen that is Peltigera, and Gyrophora, and the given example here that is Colema. जो Colema है ये आता है हमारा foliose lichen में. The next third category is of this lichen that is fruticose lichen. This is one of the most advanced lichen जो हमें दिखती है shrubs की तरह. So it appears shrubby in appearance. तो इसका जो thallus होता है that is thallus is well developed. Thallus इसका well developed होता है, cylindrical and grows some thallus grows erect. कुछ thallus है वो erect grow करते हैं. For example we have this Cladonia, जो इसका thallus होता है ये erect grow करता है, and जो some thallus they grow hanging downwards from the substratum. For example we have जो hanging thallus है, hanging thallus, like we have one example that is Asnia. ये downward grow करता है, hang करता है from the substratum. In addition to this we have some other examples of this fruticose lichen, जिसमें आता है हमारे पास Evernia. This is very important fruticose lichen, और इसको यूज़ किया जाता है in making some incense material. Then we have this given example that is Electonia. तो ये जो examples हैं ये सारे ये जो examples हैं they are of fruticose lichen, and this is one of the most advanced type of lichen. तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का that we can now understand, its right answer is Electonia. This is the fruticose lichen. Some other facts related to lichens. This is the photograph of this Colema, and it is example of this foliose lichen. Then we have this Strigula. It's a crustose lichen. It appears like a thin crust on the substratum. Then we have this Peltigera,
इट्स अ ड्रॉक फ्लावर, इट इज़ अगेन अ फॉलियोज लाइकन, और ये ग्रो करता है, इट स्प्रेड्स हॉरिजॉन्टली एंड हैव लोब्स, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं. देन फाइनली कम्स दिस लाइक. The next question asked was, target board is a most common symptom of which of the following diseases caused by fungus? So firstly we have this loose smut of wheat, then next comes red rot of sugarcane, then comes early blight of potato and late blight of potato. So its correct answer is early blight of potato. और जो early blight of potato है, this is caused by, ये जो disease है, it is caused by one fungal genus that belongs to Deuteriomycetes, जिसका नाम है Alternaria solanae. तो ये जो डिजीज़ है, इट इज़ कॉज्ड बाय दिस जीनस अल्टरनेरिया सोलेनाई, और इस डिजीज़ का नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. इसे कहा जाता है टारगेट बोर्ड बिकॉज क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं टारगेट बोर्ड की तरह, टारगेट बोर्ड ऑफ शूटिंग और आर्चरी जिसमें कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं. तो इसके सिम्टम्स भी लीव्स के ऊपर ऐसे ही दिखाई देते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस डिजीज, दिस सिम्टम इज ऑन ए टारगेट बोर्ड, और ये कॉज करता है अल्टरनेरिया सोलेनाई, और इस डिजीज़ का नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. So these are some symptoms that we can see in these images. Concentric rings बनती है इसमें. Initially they are chlorotic and with the passage of time they becomes necrotic. तो death हो जाती है टिश्यू की, and this is caused by this genus that is Alternaria. Species is Solanae. Then we have some other fungal genera जो different disease cause करते हैं. Firstly we have this loose smut of wheat. It is caused by Acylagotrytici. It belongs to Basidiomycetes. तो इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहा जाता है बेसिडियो स्पोर्स, और माइसीलियम इसमें सेप्टेट होता है. बट ये जो सेप्टा होता है, इट इज़ विदाउट दिस सेप्टम दैट इज़ कॉल्ड डॉलीपोर सेप्टम. डॉलीपोर इसमें एब्सेंट होता है. सो जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं उनका फीचर है कि दे हैव दिस डॉलीपोर सेप्टम, बट जो रस्ट और स्मट फंजाइज होती हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं डॉलीपोर्स. प्राइमरली ये पैरासिटिक है और ये कॉज करता है स्मट डिजीज. दैन नेक्स्ट वी हैव दिस जीनस दैट इज़ फाइटोप्थोरा. इसकी जो स्पीशीज दैट इज़ इन्फेस्टेंस, ये कॉज करता है एक डिजीज़ पोटैटो का, जिसे कहा जाता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. इट बिलोंग्स टू द क्लास ओमाइसिटीज. इसमें जो सेल वॉल होती है जो स्पोर्स की, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सो दिस इज़ यूनिक फीचर, इसलिए इस ग्रुप को फाइकोमाइसिटीज भी कहा जाता है, और इसे एक और नाम से जानते हैं दैट इज़ एल्गल फंजाई. इसे एल्गल फंजाई भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेल वॉल में. दीज आर कॉमनली वाटर मोल्ड एंड रिक्वायरिंग हाई ह्यूमिडिटी. द नेक्स्ट वी हैव दिस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनाई. ये बिलोंग करता है क्लास को ड्यूटेरियोमाइसिटीज. इसे फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज एब्सेंट. सेक्स ऑर्गन्स इसमें बनते नहीं है. सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई. और इसमें कोई भी सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है. प्रोड्यूसेस कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं, और स्पेसिफिकली जो ये डिजीनस प्रोड्यूसेस म्यूरिफॉर्म कोनिडियास. सेप्रोफिटिक पैरासिटिक फंगस है ये. द नेक्स्ट वी हैव दिस रेड रॉट ऑफ शुगरकेन. इट इज़ कॉज्ड बाय कोलिटोट्राइकम फैल्केटम. ये डिजीज़ कॉज करता है और ये बिलोंग करता है क्लास एस्कोमाइसिटीज, और ये प्रोड्यूस करता है एस्कोस्पोर्स. द नेक्स्ट माइसीलियम इसमें सेप्टेट होते हैं, और जो फ्रूटिंग बॉडीज इसमें बनती हैं उन्हें बोलते हैं एस्कोकार्प्स. Then I have one additional table that shows various causal organisms and diseases caused by various fungus. So firstly we have this Alternaria triticina. ये cause करता है, this causes leaf blight in wheat. Then we have Fusarium oxysporum. Fusarium is meant to cause disease जिसे बोलते हैं wilt. तो जो Fusarium wilt है ये cause क्या करता है, wilt disease in tomato. Then we have this Rhizoctonia solanae. ये cause करता है sheet blight in rice. Then we have this Sclerotium rolpsi. It causes wilt disease in potato. Then we have this Pythium aphanidermatum that causes damping of seedlings in case of tomato. Then we have this Pythium dibarianum. एक और genus है that is called as, I think this is Pythium dibarianum. ये कॉज करता है डैम्पिंग ऑफ सेडलिंग्स. देन वी हैव स्क्लेरोशिया स्क्लेरोशियम. ये कॉज करता है ड्रॉट इन सनफ्लावर. देन वी हैव अल्टरनेरिया सोलेनाई. ये कॉज करता है ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो. देन वी हैव दिस सेराटोसिस्टिस पैराडॉक्सा. ये कॉज करता है पाइनएप्पल डिजीज. पाइनएप्पल में डिजीज कॉज करता है.
The next question asked was a mixture of copper sulfate and ammonium carbonate in the ratio of 2:1 is which of the following fungicide? Our options are burgundy mixture, then we have this body mixture, chestnut compound, and sulfur sprays. And the right answer of this question is chestnut compound. जो chestnut compound है ये बनता है by the combination of this copper sulfate and ammonium carbonate in the ratio of 2:1. और ये जो fungicide है this is very important soil fungicide. इसको mostly यूज़ किया था तो कंट्रोल सम फंजाई लाइक वी हैव पाइथियम एंड राइजोक्टोनिया, इनको कंट्रोल करने के लिए इसे नर्सरी बेड्स में यूज़ करते हैं. दिस इज़ द फंजीसाइड. सो दिस इज चेस्टनट कंपाउंड और इसको यूज़ करते हैं हम सॉइल में फंगस को कंट्रोल करने के लिए और मोस्टली वी यूज़ इट अगेंस्ट दिस फंगस दैट इज़ पाइथियम एंड राइजोक्टोनिया. नर्सरी बेड्स में से यूज़ किया जाता है. इफ़ यू टॉक अबाउट इस प्रेपरेशन तो 2 पार्ट्स हम यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट के, देन 1 पार्ट इज़ यूज्ड ऑफ दिस अमोनियम कार्बोनेट. द नेक्स्ट जो ये पाउडर है इसको हम थॉरली मिक्स करते हैं और इसको स्टोर करते हैं इन द एयर टाइट कंटेनर फॉर 24 hours. एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज़ इट इन दिस अमाउंट, दैट इज़ वी कैन यूज डिजॉल्व 3 grams ऑफ मिक्सचर पर लीटर ऑफ द वाटर. इनिशियली वी कैन यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर, बाद में इसको हम कोल्ड वाटर में इसमें कोल्ड वाटर ऐड कर सकते हैं. एंड द मेथड ऑफ यूज इज वी हैव टू ड्रेंच द सॉयल बाई with this chemical substance जो हमने prepare किया in nursery beds to prevent or to get rid of this fungal diseases. If I talk about other fungicides, जो burgundy mixture है it is made up of ये बनता है by copper sulfate and by using sodium carbonate. तो इनका इन सॉल्ट्स का जो रेशो है इसको हम डिज़ोल्व करते हैं पानी में, जिसके रिजल्ट से हमारे पास सॉल्यूशन बनता है बर्गंडी मिक्सचर. दैन नेक्स्ट वी हैव वन फेमस फंजीसाइड जिसका नाम है बॉडिक्स मिक्सचर. ये बनता है बाय डिजॉल्विंग कॉपर सल्फेट इन स्लेक लाइम दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इसके कॉम्बिनेशन से बनता है बॉडिक्स मिक्सचर. दैन सल्फर स्प्रे, इट यूजेस सल्फर कंपाउंड्स. और ये जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं ये अल्टर करते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ द फंगस, जिससे ये जो फंगस है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, उसके स्पोर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं. Then if we talk about this explanation of these other fungicides, so Bordix mixture, जो Bordix mixture है that I've already discussed, ये जो fungicide है बनता है by mixing copper sulfate and calcium hydroxide that is slaked lime, और इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया था in agriculture to control fungal disease in plants. Then we have this burgundy mixture, ये भी similar है but इसमें हम कॉपर सल्फेट के साथ यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट. दैन नेक्स्ट वी हैव चेस्टनट कंपाउंड, इसमें हम यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट और अमोनियम कार्बोनेट. दैन फाइनली कम सल्फर स्प्रेज, इसमें हम डिफरेंट तरह के फंजीसाइड को बनाने में यूज़ होते हैं और सल्फर प्रेजेंट होता है एंड इट मेनली यूज टू प्रिवेंट पॉट. दिस नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड वाज फ्रॉम ब्रायोफाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैज़ 5 rows of neck canal cells in Archegonium. As we know that Archegonium is the female reproductive structure in case of Bryophyte. तो इसमें कितने neck canal cells present होते हैं in which of the following Bryophyte genus? So first option is Porella, then comes Funaria, then comes Sphagnum, then comes Markensia. तो जो Porella है ये आता है हमारे पास एक क्लास के अंदर जिसे बोलते हैं जंगर मैनियोप्सिरा, और इसे कॉमनली कहा जाता है लीफी लिवरवर्ट. देन कम्स फ्यूनेरिया, इसे कॉमनली कहा जाता है कॉर्ड मॉस. देन कम्स स्पैगनम विच इज़ कॉमनली नॉन एज पीट मॉस, और इसे बॉग मॉस भी कहा जाता है. देन कम्स मार्केंशिया दैट इज़ कॉमनली नॉन एज लिवरवर्ट. इट कम्स अंडर दिस ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट लिवरवर्ट. तो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ पोरेला. जो पोरेला है इसके साथ एक और जीनस है जिसका नाम है मेडोथिका. इन 2 जीनस में प्रेजेंट होते हैं 5 rows of neck canal cells. So this is the photograph which shows this leafy liverwort. This is the photograph of Porella, or this is the Archegonium of Porella, and here is a flask shaped structure. इसका जो structure है वो होता है flask shaped.
This is called neck and this is called venter, and it contains egg. This swollen base is known as venter. It contains egg. और ये जो यहाँ पे neck है इसमें present होते हैं neck canal cells और इसमें present होते हैं 5 rows of neck canal cells. So this is a unique feature of this group और इसमें आता है porella. The next with this porella is the liverwort. This is commonly a leafy liverwort. Archegonian neck बोलते हैं, इसमें 5 vertical rows of neck canal cells present होते हैं. Porella एक common genus है liverwort का, mostly temperate areas में पाया जाता है and it is attached to the tree bark. Then next comes Funaria, that is commonly known as cord moss. इसमें होती है single layered और rowed archegonial neck, and the neck of Funaria archegonium has 6 to 10 neck canal cells. Then comes Markensia. Markensia में होते हैं 8 rows of neck canal cells. The next we have Rixia. इसमें present होते हैं 6 vertical rows of neck canal cells. Then we have this archegonium, the female reproductive organ, Bryophytes, Pteridophytes. जो flask shaped इसमें structure होता है that has a narrow neck and is made up of neck canal cells, and जो neck canal cells they create passage for the sperm entry. The next question asked is from Bryophytes again. It is questions from Markensials. So the number of types of rhizoids and scales found in Markensials are, or options are, जो ये order है Markensials, इसमें कितनी तरह के rhizoids और कितनी तरह के scales पाए जाते हैं. So our options are 1 each, 2 each, 1 and 2, or 2 and 3. So its right answer is 2 each. जो Markensials हैं इनमें पाए जाते हैं 2 तरह के rhizoids और 2 तरह के scales. जो 2 तरह के scales हैं, one is simple or ligulate scale, second one is the appendiculate scales. While rhizoids are again of 2 types, one is simple rhizoids and second type is tuberculated rhizoids जिनमें होती हैं peg like thickenings. So this is the dorsal surface of Markensia, और इसमें जो ये cup की तरह structure present होते हैं इन्हें बोला जाता है gamma cups. इसके अंदर होते हैं gamma which helps in vegetative reproduction. And this is the ventral surface of Markensia thallus. It contains 2 rows of scales. जिसमें एक होते हैं simple scales जिन्हें बोलते हैं ligulate scales, and second row is of the appendiculate scale. So this appendage is known as appendiculate scale, and this is the simple scale. Then it contains 2 types of rhizoids. So this is the simple rhizoid, and which is the simple rhizoid. The next comes, इसको कहा जाता है, this simple rhizoid is known as smooth walled rhizoid. इसमें कोई भी थिकनिंग्स अंदर की तरफ को नहीं होती. While the second type there is known as tuberculated rhizoid, it contains these peg-like thickenings in the rhizoid. So there are 2 types of rhizoids and 2 types of scales in case of Markensia. So scales are of 2 types. One is simple or ligulate, second one is appendiculate. So appendiculate scales form the inner row of the scales close to midrib, while the ligulate scales form the outer or marginal row of, which are smaller than the appendiculate scales. Second rhizoids होते हैं unicellular, branched and developed from the as a prolongation of lower epidermal cells. 2 तरह के होते हैं, one is smooth walled rhizoids, second one is tuberculate rhizoids. जो smooth walled rhizoids होते हैं इनमें जो both inner और outer walls होते हैं they are fully stretched, while जो tuberculated rhizoids होते हैं they appear like circular dots in surface view, और जो inner wall होती है that is modified into bag like growth projection into the cell lumen. So this was all about for today's discussion about this first part of this series. So stay tuned for the remaining parts. Until then, keep learning, stay curious, and ace your preparation. Thanks for watching. Have a great time.